Yeah. So if you want to print up to one digit, okay, then what you'll do? Point one. ये देखो पहला का जो समय ये 19.0 तक है and rest all are up to 8 digits. So we want to get output for up to only one digit after the decimal. Then what shall we do? We just write dot 1f, dot 1f, dot 1f. If you want the output up to 2 digits, then we'll write dot 2f. If you want the output up to 3 digits, then we'll write 0.3f. Okay. So this is how it is done. Uh, I am sharing my screen. Okay, you can disconnect Disha from any desk. Okay, so in the last class, we saw what are variables. Now let's come to instructions. How many types of instructions are there? There are basically four types of instructions: data type instructions, input output instructions, arithmetic instructions, and control instructions. Okay, so we have already seen data type declaration instructions. What are those? Those are nothing but what we were studying in the last class. These declaration statements like int x is equal to 5 or float k equal to 2.34, all these are declaration statements in which we declare something. Okay, we are declaring the variables here, so this is called a declaration statement. And what are input output instructions in C? These are nothing but the printf and scanf functions. These are input output instructions, and these are declaration instructions, data type declaration instructions. What is the data type of x? The data type of x is int. What is data type of k? The data type of k is float. What is data type of a? It is character. What is data type of d name? D name is a variable. Double. What is double? Double is nothing but float's big brother, you can say. Float is of 4 bytes and double is of 8 bytes. Okay, now let's come to arithmetic instructions. So these are the different types of arithmetic instructions in C. First is unary operator, then arithmetic operators, then bitwise operators, then relational, logical, conditional, and at the last we have assignment operators. And these operators have been written down in order of their priority. Priority means if we encounter more than one operator in a instruction, then the operator which has a higher priority will be executed first. Okay, for example, in childhood, I guess you all have done board mass in maths. You remember board mass? Anyone? You remember board mass? Yes, four of you. In board mass, what did we do? What do we do in board mass? First, we do division, then we do multiplication, then addition, and then subtraction. Okay, so if in a sentence, let's say we have 5 into 7 divided by 6 plus 8 minus 2. For example, we have something, a mathematical expression like this. Then what do?
We first do division, then we do multiplication, then we do addition, then we do subtraction. Okay. Similarly, in programming also, whenever more than one operators occur in one line, okay, then the operator which has a higher priority will be executed first. What are operator and operands? A very basic example I am giving you. For example, a plus b. Okay, then this a is called operand. A and b, these are called operand, and this plus is called operator. Okay, a and b are operand, and plus is called operator. So these all are operator: minus, plus plus, minus minus, size of. This is multiply, divide. This is modulus. This is addition, subtraction. This is bitwise not. Okay, there are many operators. We'll see each of them one by one. Okay. So first, let's start from unary operators. First is, in unary operator we have 7 kinds of operators. First is unary minus. Next is unary not. Then we have bitwise not. Then we have increment, decrement, address of operator, and size of operator. Okay, so see, we have used a minus operator. This is a unary minus operator. Okay? This one, unary minus. And why it is called unary? What is the meaning of unary? Unary operator is so called because these types of operator need only one operand to work on. Okay, for example, if you are writing a plus b, okay, then plus is an operator, and a and b are called operands. So this plus operator requires two operands to work on. Okay, so this is why plus is not a unary operator. It comes under arithmetic operators. It comes under arithmetic operators. But these operators, unary operators, they need only one operand to work on. For example, you can do a plus plus. How many operands does plus plus requires? Only one operand, only a. If you want to use size of operator, then how many operands it will require? It will require only one operand, which will be written here. This is why they are called unary operators. Unary means one, only one. Unary means one. So these types of operator require only one operand. So what will be the output of this program? Why is unary minus used? It is used to just change the sign. Okay, for example, 10 was stored in A. So what will unary minus do? It will change the sign. So the output will be minus 10. Minus 10. And if I had stored minus 10 in A, then the output would have been 10 plus 10.
10. Okay. Next, we have NOT operator. What does NOT operator do? NOT operator reverses the logic state of its operand. In simple terms, if I say, and note down one thing, in programming, 1 always means true and 0 always means false. Okay. So what NOT operator do, whenever it encounters a statement which is true, it will print 1, and whenever it encounters a statement that is false, it will print 0. Wait a second, I'm coming in. Let's say if I write a statement printf %d, and inside it I write a condition x equal to 5, so not x, a equal to 5. So what does this statement means? What is the meaning of this instruction? This instruction means if a is equal to 5, print 1. Why 1? Because every true is 1. Every true in programming is 1, and every false in programming is 0. Okay. So if a is equal to 5, then the program should print 1. And if a is not equal to 5, then the program should print 0. Compile and run this. Look, what is the output? 1. Why? Because a is equal to 5. So this is true. That is the reason we are getting 1. If I write something else, a is equal to 6, then this is false. Then let's see what we get after compilation. Look what we got. We got 0. Why 0? Because this statement is false. A is not equal to 6. So what is the purpose of not operator now? It will just reverse the outcome. If I use a not operator, this is the symbol of not operator, an exclamation sign. Then what happens? Look what we got. We got 1. Why 1? Because a was not equal to 6, so we got false. And not a false. Not a false means opposite of false. Not operator means opposite. Okay. Opposite of false is true. So we got 1. So we got 1. Similarly, if a is equal to 5, this is true. Okay, this is true. And what is opposite of true? Or opposite, you can say complementary of true. What is complementary of true? False. So it will print 0. Look, it prints 0. Here, this was unary minus, this was not, and now we come to bitwise not. Now this is a pretty complex, but don't worry, I'll try to explain you in a very easy manner. First of all, tell me how many of you know binary and decimal system. How many of you know? Number system, I guess you might have
learned this in school, but you all have forgotten. Okay, never mind. I'll teach you. As you all know that a computer does not understand English, Hindi language or our mathematical language. It only understands zeros and ones. Okay. What is the language of computer? It's only 0 1 0 1 1. Okay. It only understands high bit and low bit, only 1 and 0. So whatever information we are providing to the computer, it has to be first converted in binary. Okay. So there are two number system, decimal system and binary number system. Decimal number system is nothing but the normal number system that we have: 1, 2, 3, 4, like this up to 9. Then again we have repetition of alphabets: 10, 11, 12, like this. Okay. So this is nothing but decimal number system. And what is binary number system? Binary number system is a number system in which we are defining each of the numbers in decimal in binary. And how is it done so? It's very simple. Binary runs in powers of 2. Okay, so first I write 2 to the power 0, then I write 2 to the power 1, then 2 to the power 2, 2 to the power 3, and it goes on like this. Okay. What is 2 to the power 0? It's 1. What is 2 to the power 1? 2. What is 2 to the power 2? 4. What is 2 to the power 3? 8. Okay. So it goes like this. And now suppose we are to write a number, let's say 5. 5 in decimal. So what is 5 in decimal equivalent in binary? How will we write? We will just write 1 inside the corresponding digit. For example, this is 5. So how can we make 5 from this? We have to just write 1 below 4, and we'll write 1 below 1, and rest digits will be 0. Now see, what is 1, 4 into 1 plus 1 into 1? How much it is? 4 into 1 plus 1 into 1? 4 plus 1 is nothing but 5. Decimal here. Now it will be easy for you. Let's say we have to let's first understand the conversion of binary to decimal, then it will be easy. Example, I write 1 1 0 1. Okay. So what is the decimal equivalent of this number? This is a binary number, and I want to find the decimal equivalent of it. So how it is find out? How is it found out? Nothing. We will write 1 into 8 plus 1 into 4 plus 0 into 2 plus 1 into 1. This is the decimal equivalent. And this is how much?
8 plus 4, 12. 12 plus 0. 0 into 2 is 0. So 8 plus 4, 12. 12 plus 0, 0. 0 plus 1 is 13. This is the decimal equivalent. What is this? 0, 0, 0, 1. What is this? 0 into 8 plus 0 into 4 plus 0 into 2 plus 1 into 1. ये कितना होता है? This is 1. 1 into 1. Oh, yeah. Yeah, 1 into 1. Okay. If I write 1, 0, 0, 1, then what is decimal equivalent of it? 1. 9. Yes, 9 plus 0 into 4 plus 0 into 2 plus 1 into 1. This is 9. Okay, understood how to convert binary into decimal? Everybody understood? Now let's say if I give you a number 1010. 0, Now 0, 1. 1010. What is the decimal equivalent of it? 10. Yes, 10. Okay, except Disha. Now any of you, one of you, sir. Anybody left? One, 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 one. What is the decimal equivalent of it? Anyone other than Disha? Okay, no. Disha, tell me. 19. 19, sir. 15. 15. Who told 19? Why, brother? Why is it 19? 8 into 1 plus 4 8 into into. 1 plus 2 into 1 plus 1 into 1. Oh, sorry, sir. Sorry, sir. Yeah, it's okay. I missed. Okay, so Again, uh, sir. Giving up. what? Again. Next question. Okay, let's say 1100. How much is this? Other than 12, sir. Disha? Yes, very good. 12. 12. Yes, very good, very good. What's your name? Okay, what is this? All zero. What is this? Hello. If 0. yes, very good. Zero. Good. Okay, so with the combination of 4 bits, these are called bits. Okay. With combination Okay, of sir. 4 bits, what is the maximum decimal number that we can print? Maximum is 15 because if we put all 1, we will get 15. Yes, sir. Okay. Yes. So let's say if we want to print a number more than 16, more than 15. For example, we want to print 20. How will we print now? The 2 maximum to the can power 4. maximum There will be 2 to the power 4 maybe. from 4 bits we can perform. We can write decimal equivalent of
maximum 15. Yes, sir. Yeah. So if you want 20, then what we will do? We will add one more bit. So our next bit will be 2 to the power 4. What is 2 to the power 4? 2 to the power 4 is 16. Just a minute. Correct? So now, what will be 20? 20 can be 1, 1, 0, 1. 0. Why 0? 16 plus 4 will be 20. So these two bits shall be 1, 1. Yes, sir. Okay? This is 20. 0, 0. Yes, sir. Yeah. What will be the maximum decimal equivalent which we can perform, which we can write from 5 bits? These are 5 bits. If we write all 1, this will be the maximum. Correct? This is the maximum number from 5 bits. 31, sir. 31. Yeah. 16 plus 31. 8, 24, 24, 28, 28, 30, 31. Very good. Okay. So can you see there is a formula? I can derive a formula now. What is that formula? The power n N. minus 1. This is a formula. What does this formula states? Yes, sir. That and what is n here? N is number of bits. Okay. So if suppose we have 4 bits, let's say n is 4, then what is 2 to the power 4? 2 to the power 4 is 16, and 16 minus 1 is 16. 15. So 15, yes. yeah, so if we have 4 bits, we can print a maximum decimal equivalent up to 15. So look, we got 15. This formula is nothing but maximum decimal equivalent. So if anyone asks you, this can be asked in an interview, or it can come in an objective type paper, that let's say the number of bits is 10. Okay? Then what is the maximum number of what is the maximum decimal equivalent that can be printed from 10 bits? What will be the answer? Maximum decimal 10 bits. equivalent that can be made from 10 bits. 2 to the power 10 minus 1. Yeah. Yes, sir. What is 2 to the power 10? It is 1024 minus 1. That is 20. Oh, sorry, 1023. This is the answer. What if n is 6? Then what is the maximum decimal equivalent that can be made from 6 bits? 2 to the power 6 minus 1. What is 2 to the power 6? 64 minus 1. That is 63. Okay, got it? So this was all about binary and decimal system. इसमें कोई डाउट है? ये समझ में आया सबको? उनको नहीं है क्लास में. Okay, so
Now let's understand what is bitwise not. Bitwise not is also called ones complement. सबसे पहले जानते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट. व्हाट आर दीज? एग्जाम्पल एक मैं देता हूँ. 1 0 1 1 0. तो ये एक बाइनरी नंबर है. दिस इज अ बाइनरी नंबर. आई हैव टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर. व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट? One's complement is nothing but just opposite of that bit. Okay, complement means opposite. What is opposite of 1? 0. What is opposite of 0? 1. 0 0 1 0 1 1. So one's complement is very easy. We have to just complement the bits. Okay, and now what is 2's complement? What is 2's complement? 2's complement is nothing but just addition of plus 1. I have to just add plus 1 here. Use complement. So what is 1 plus 1 in binary? Okay, let me tell you first the rules of arithmetic. 1. No, 1 plus 1 is not 1. Rules of binary. There are some rules of binary like 1 plus. तो यहाँ मैं बता देता हूँ बाइनरी रूल्स. ठीक है, वन प्लस वन इन बाइनरी क्या होता है? 0. और साथ में एक कैरी होता है ऑफ 1. ठीक है, और वैसे ही 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 प्लस 0 इज 1. ओके, 0 प्लस 1 क्या होता है? ये भी 1 होता है. एंड 0 प्लस 0 होता है 0. ठीक है, तो 1 प्लस 1 क्या है? 0 विथ कैरी ऑफ 1. 1 प्लस 0 इज 1. 0 प्लस 1 इज अगेन 1 एंड 0 प्लस 0 इज 0. ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है? जस्ट इनवर्ट ऑफ ऑल द बिट्स. 1 becomes 0 and 0 becomes 1. Okay, and what is 2's complement? 2's complement is nothing but adding 1 to the 1's complement. तो ये क्या होगा? 1 plus 1 0 with a carry forward of 1. अब 1 plus 1 वापस हो जाएगा 0 with a carry forward of 1. अब 1 plus 0 1 होगा. अब यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये सीधा यही होगा. ठीक है, ये 2's complement है. किसी को कुछ डाउट कि वापस समझाओ? ये समझ में आया? 2's complement समझ में आया सबको? ये हम लोग क्या किए? यहाँ ऐड किए, प्लस 1 ऐड किए. प्लस 1 ऐड किए. ठीक है, अभी मैं एक नंबर और देता हूँ. अब इसका आप लोग को बताना है वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है. 1 1 1
0 1 0 0 1। ठीक है, अभी बताओ इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट तो बहुत इजी है। एनी वन ऑफ यू टेल व्हाट विल बी द वंस कॉम्प्लीमेंट। 0 0 0 1 0 1 1 0. यस, वेरी गुड। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट विल बी टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग प्लस बट प्लस वन। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। 0 हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 लेफ्ट, सॉरी राइट। या वन, देन 1 0 नहीं 1 हाँ फिर ये 1 यस 1 वाई वन। Because 0 1 plus 0 1 or equals 0 to 1 1. 0 Here is nothing. Nothing means zero. What is zero plus zero? Zero only. 1 क्या हुआ? 0 0 0 Sir, Zero. it will be 1 plus 1 or 0 plus 0. I'm not getting your words. This is 0 0 0 1 0 1 1 0. And what if I add 1 to it? What is 0 plus 1? 1. 1. Yeah. And nothing yes is in carry. Nothing is in carry. 0 plus 1 is 0. And nothing is in carry now. 0 plus 1 equals to 1. Yes, so I have written 1 only. Hmm. And now we don't have any carry forward. So we'll write as it is. 0 0 0 1 0 1 1. So we have written as it is. 0 0 0 1 0 1 1. अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कैरी आई थी, ठीक है, इसीलिए 1 प्लस 1 0 हुआ था। तो कैरी फॉरवर्ड आया 1। अब वापस 1 प्लस 1 0 हो गया और एक कैरी फॉरवर्ड आया 1। अब 1 प्लस 0 वापस से 1 हो गया, लेकिन इस बार कैरी फॉरवर्ड अब नहीं आया कोई। तो उसके बाद से एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया। वो वर्ड में शायद तुम लोग को ठीक से समझ। sir क्या 1 0 1 0 1 ठीक है 0 फिर एक ठीक है। अब इसमें मुझे ऐड करना है प्लस वन ऐड करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, 1 प्लस 1 करूंगा। 1 प्लस 1 कितना होता है, 0। 0 या 0 0 0 plus carry 1. या अब एक कैरी 1 जाएगा। तो यहाँ पे एक कैरी 1 आ गया। ठीक, अब 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 0 1 यहाँ का आएगा 1 या 1। और फिर कैरी अब चला गया। then तो अब एज इट इज इसको कॉपी कर देंगे। as it is yeah ये है डेसिमल इक्वल, समझ में आया। Hmm. ये अब ये लास्ट वाला आप लोग बताओ क्या होगा। 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 हाँ, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 1 1 0 0 1 1 1 यस वेरी गुड। अब टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, and इसका 0 0 plus 1 carry हाँ फिर
and 110. Yes. Then adds it 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1. 1 अब यहाँ क्या होगा? 1 because of we have no carry. कैरी नहीं है, श्योर? 1 + 1 क्या Uh, कैरी है? है 0 and और the एक 1 0 कैरी। कैरी है carry. सर, हाँ, कैरी है So सर, 110. Yes, 0 yes, होगा। yes, yes. अब वापस अब यहाँ क्या? carry नहीं है. आप कैरी नहीं 0 है सर। 0 देखो 0 1 ये देखो 1 + 1 यहाँ पे 0 0 1 1 क्या 0 होगा? 0 कैरी 1। अब कैरी 1 1 + 1 वापस क्या होगा? 0। अब वापस से यहाँ कैरी 1, तो वापस एक 1 है। 0 1 अब कोई हाँ. कैरी नहीं कैरी है। है सर, यस अब सर। अब 0 नहीं, 1 अब कॉपी पेस्ट मार दो, अब 0. कोई कैरी नहीं है। बस अब ये 0 होगा, 1 1 0। ठीक है? तो 1 + 1 0 है। यस सर। कैरी का बना देता हूँ तब। ये कैरी इंडेक्स है। ये था क्वेश्चन, तो बोर्ड कर देते। 1 + 1 क्या होगा? 0 और कैरी यहाँ 1 है, ठीक? 1 आ गया। तो कैरी यहाँ 1 है, यहाँ 1, हाँ, इधर कैरी 1 है। अब 1 + 1 वापस 0, एक कैरी वापस फॉरवर्ड आया 1। अब 1 + 1 वापस 0, एक और कैरी फॉरवर्ड आया 1। अब 1 + 0 क्या होगा? 1। अब और कोई कैरी है ही नहीं बाकी, तो एज इट इज कॉपी करते हैं, ठीक है? तो अभी देखो, अब बिट वाइज नॉट कैसे काम करता है। अब ध्यान से देखना, अभी आप लोग को क्या आ गया? बाइनरी टू डेसिमल आ गया आप लोग को। आप लोग को वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना आ चुका है, आप लोग को टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना आ चुका है, ठीक है? तो अब अपन देखते हैं ये बाइनरी नॉट कैसे काम करता है, ठीक है? इसका एक प्रोग्राम, ठीक है? सॉरी, बिटवाइज ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू 5 एंड %d बिटवाइज नॉट ऑफ ए। इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट देखते हैं क्या आता है। इसका आउटपुट क्या है? -6, ठीक है? -6। अब ये -6 क्यों आया? तो देखो ये बिट वाइज नॉट काम कैसे करता है। अब ये बिट वाइज नॉट कैसे काम करता है? सबसे पहले जो 5 है वो डेसिमल में कंपाइलर लिख देता है, ठीक है? पहले ये डेसिमल में कन्वर्ट होता है ये 5। तो व्हाट विल बी 5 इन डेसिमल? 0 0 1 0, डेसिमल में 5 ये 1, ठीक है? तो 1 0 1 0 0 0 0 0, अब बाकी सब 0 ही रहता है, ठीक है? ये हमने 16 बिट कंपाइलर लिया है। जितने भी कंपाइलर्स हैं वो डिपेंड करते हैं, कोई 16 बिट का होता है, कोई 32 बिट का होता है, ठीक है? तो टर्बो सी प्लस प्लस वगैरह, डेव सी प्लस प्लस, ये सब क्या है? ये 16 बिट कंपाइलर्स है, ठीक है? तो ये जो 5 है ये पहले कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगा? 1 0 1 और बाकी सब 0, ओके? समझ में आ गया? अब नॉट 5 क्या होगा? ये है नॉट 5, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऑपोजिट, हाँ। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? 1 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 0 1 0, ओके? ये हो गया 5 का कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो नंबर है, ये नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर पाए तो वही होगा अपना आउटपुट, ठीक है? ये नंबर एक्चुअल में क्या है? ये जो नंबर है पूरा 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0, ये एक्चुअल में डेसिमल में क्या है?
इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करने जाएंगे तो क्या होगा, बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि 2 to the power 15 एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 2 to the power 14 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हालत खराब हो जाएगा, इतना बड़ा डिजिट। तो इसका एक हम लोग के पास तरीका है। वो तरीका क्या है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो पहले। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज़ और, ये वन येलो में क्यों है? और सी प्रोग्रामिंग में जो पहला बिट होता है इसको हम लोग कहते हैं एमएसबी। ठीक है, एमएसबी। ये लैपटॉप में प्रॉब्लम होगा लिखने में, इसीलिए आप लोग समझ जाओ। ये बी है, बी। ठीक है, तो ये क्या है एमएसबी, ये जो वन है इसे बोलते हैं एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो लेफ्ट राइट मोस्ट में होता है इसे हम लोग कहते हैं एलएसबी, एल एस बी। एलएसबी मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अब ये एमएसबी का काम क्या है, ये एलएसबी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसका कोई इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। ये एमएसबी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में एमएसबी जो होती है वो डिसाइड करती है कि नंबर का साइन क्या होगा। ठीक है, अगर एमएसबी वन है, ठीक है, एमएसबी जैसे कि हम देख सकते हैं इट इज़ वन हियर। so if MSB is 1, the number is considered to be a negative number, एक नेगेटिव नंबर होता है। and if MSB is 0, then that is a positive number। ठीक है, तो अगर MSB 1 है तो वो एक नेगेटिव नंबर होगा, अगर MSB 0 है तो वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे MSB क्या है, यहाँ अपनी MSB है, यहाँ MSB है 1। इससे ये तो पता चल गया कि ये एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, इससे ये पता चल गया एक नेगेटिव नंबर है। अभी इसका जो डेसिमल निकालेंगे वो एक्चुअल में एक नेगेटिव नंबर होगा। तो अभी देखो हमारे पास एक मेथड है, एक नेगेटिव नंबर का अगर हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर मिल जाता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर का अगर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हमें वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में मिल जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अभी इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका नॉट 5 का, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सिंपल है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 एवरीथिंग 0 1 0 1 लास्ट में। ठीक, एंड व्हाट विल बी टूस कॉम्प्लीमेंट? टूस कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं, बस +1 कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1, ओ सॉरी 0, कैरी फॉरवर्ड 1, दैट इज 1। और अब ये एज इट इज कॉपी कर दो। ठीक है, तो ये हो गया इसका टूस कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो टूस कॉम्प्लीमेंट है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 1 1। ये किसका बिट्स 1 1 है, 4 एंड 2 का, तो 4 + 2 कितना होता है, 6। बाकी सब तो 0 है। ठीक है, तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है, 6। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल में आउटपुट क्या आएगा, एक्चुअल में आउटपुट आएगा -6। क्यों? क्योंकि एमएसबी हमारी 1 थी, एमएसबी वॉज 1। ठीक है, since the MSB of not 5 is 1, the binary number is a negative decimal number, thus the actual output is -6। ठीक है, अब सिंपली अब देखते हैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग खुद से लेते हैं यहाँ,
अब ये आप लोग के साथ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 12, ओके। सो व्हाट विल बी 12 इन बाइनरी? बोलो आप लोग, व्हाट विल बी 12 इन बाइनरी? सॉरी, हाँ वही 12 इन बाइनरी क्या होगा? 8 + 4, व्हाट? 8 + 4, 8 + 4, यस। सो बाइट्स हम लोग क्या लिखेंगे? 0 0 0, 0, 1, 1 1, 1 एंड देन 0, बाकी सब 0। 0. ठीक है। अब इसका एमएसबी निकालने के लिए पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम लोग। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12? 1 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 0 0 0 0 1 1, 1 ओके। 1 अब वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट 12 क्या होगा? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 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 1 1 0 0, ओके। अभी इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उस टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए करना होगा +1 करना है। 0 तो क्या लिखेंगे? 0 y 0 0 + 1 इज हाउ मच? कैरी 0 1 है ना सर? कैरी वैरी अभी कुछ नहीं, अभी ऐड स्टार्ट ही कहाँ की है जो कैरी होगा? ये तो पहला बिट है। 0 + 1 क्या होगा? 1। कैरी कुछ है ही नहीं, 0। ये एज इट इज कॉपी कर दो बस। कैरी तो कुछ है ही नहीं। 0 + 1 1, कैरी क्या हुआ? ये है इसका टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये एक्चुअल में कितना है? डेसिमल में इसको कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? ये 8 4 और 1, ये 3 बिट्स 1। इसका मतलब ये कितना है? 12 12 नहीं, 8 4 एंड 1 कितना होता है? ये 3 बिट 1 है। ये कितना है एक्चुअल में? ये है 13, करेक्ट। और इसका साइन क्या होगा? Positive. y पॉजिटिव। MSB इज 1, so it will be negative, it will be -13। अब इसी को लिख के देखो, if a is equal to 12, let's find complement of it, bitwise not of it। what is bitwise not? ये देखो -13 आया, -13। ये अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स आप लोग को लग रहा होगा, बट प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है। आज जो सब मैंने पढ़ाया वो सब प्रैक्टिस करो। मैं एक्सेल शीट अपलोड कर देता हूँ, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। ये जो नोट्स है मैं बना रहा हूँ, ये सब नोट्स मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये वीडियो वापस से देखो आज का क्लास। अब मुझे पता है मतलब क्लास अब बहुत टेक्निकल होते जा रही है, देखो तभी तो आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे, नहीं तो इतना आसान होता सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। सॉफ्टवेयर डेवलपर हर कोई नहीं बन जाता क्या? भी आप लोग ये सब सीखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि इतना सारा चीज़ है जो आप लोग को समझ में आएगा कंप्यूटर के बारे, सॉफ्टवेयर के बारे में, कोडिंग के बारे में। तो वही चीज़ बाद में फ्यूचर में आप लोग को एक क्राउड से पूरा अलग बनाएगा। और जो क्राउड से पूरा अलग लोग होते हैं, वही लोग इनकम भी उनका सबसे अलग होता है। सबको पैसे कमाना है ना अच्छे खासे, कि वही 10-20 हज़ार की नौकरी करनी है, वैसा तो नहीं करना है ना। अपन कोडिंग क्यों सीख रहे हैं? ताकि आगे जाके अच्छा पैसा कमा पाए। तो अच्छा पैसा कमाने के लिए आप लोग को ऐसी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं पढ़ पाते। ये सब चीज़ सब नहीं समझ पाएंगे। कोडिंग सबके बस की बात नहीं है करना, ठीक है। तो आप लोग अगर कोडिंग सीख जाओगे तो आप लोग की मार्केट में जो वैल्यू बनेगी वो
इमेंस वैल्यू बन जाएगी आप लोग की। उसके बाद पैसे के बारे में कभी सोचना नहीं होगा। ठीक है, ये सब टफ है, मुझे पता है थोड़ा आप लोगों को टफ लगेगा, आज पहला क्लास है, बट बिलीव मी अभी आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब बहुत इजी लगेगा बाद में आप लोग को। ठीक है, तो नर्वस मत होना अभी, अब ऐसे ही अब क्लास का लेवल बढ़ेगा हर दिन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो जो क्लासेस चल रही है वो रिवाइज करो। अगर कल का क्लास नहीं देखे होगे तो आज का क्लास समझ नहीं आएगा, अब आज का क्लास जो नहीं देखेगा उसे कल का क्लास समझ में नहीं आएगा। तो अब ये कंटिन्यूएशन हो रहा है। ठीक है, हर क्लास दूसरे क्लास से लिंक्ड है। अभी आज का क्लास जो नहीं करेगा वो फ्यूचर क्लासेस अब उसको समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग घर में असाइनमेंट्स करो। आज दिशा सिर्फ असाइनमेंट दिखाई और कोई आप लोग नहीं दिखाए, गलत बात है ना ये। इतना मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, फिर ये सब भूल जाओगे आप लोग। इसको अभी क्लास के बाद अगर आप लोग रिवाइज नहीं किए सब भूल जाओगे। ठीक है, तो अब आज बिटवाइज नोट तक रहने देते हैं। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एड्रेस ऑफ साइज ऑफ सब। ठीक है।